So four brutal reality checks, or you can say brutal advices that I got from the Muhammad Ghazali, who is a very successful businessman and entrepreneur of Pakistan, related to the startup survival and business impact analysis. So first of all, the first brutal reality check that he gave is the mindset of the founders. He said that there are two types of founders nowadays. Number one, there are real founders, and then there are the hobby founders. So you said that nowadays there's a big trend on LinkedIn, Instagram and Twitter और social media कि जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स या स्पेसिफिक सोलोपर्नर्स जो होते हैं जिसको जो somehow आपको खुद को सोलोपर्नर कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिंपल कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको एक फैंसी सा नेम देते हैं और खुद को एक फाउंडर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई फाउंडर ऑफ दिस फैंसी नेम्ड कंपनी. सो वन वे ऑफ बिकमिंग इज फाउंडर इज दिस, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई फाउंडर एक बहुत ही फैंसी रोल है, एक प्रिविलेज है, जहाँ एक बेज है जो कि आप अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हैं और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं. सो ही सेड दैट दीज फाउंडर्स आर नॉट द रियल कंपटीशन. सो ये वो फाउंडर्स होते हैं जिनका कोई विजन नहीं होता, कोई रियल प्रोडक्ट नहीं होता, वो बस एक सेल्फ स्कीम में ही होते हैं समहाउ कि भाई खुद को खुश करने के लिए या एक सेटिस्फाई करने के लिए खुद को फाउंडर समझते हैं और अट्रैक्शन लेने के लिए सिंपली खुद को एक फाउंडर डिक्लेयर कर देते हैं. देन ही टॉक्स अबाउट द रियल फाउंडर्स, जहाँ जो हमारा मेन मकसद है कि भाई रियल फाउंडर्स कौन से होते हैं. सो ही सेज दैट फर्स्टली फाउंडर्स नॉट ए फैंसी रोल, इट्स ए माइंडसेट ऑफ ब्रूटल ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड ए पर्सन विथ सच serious mindset who takes the full responsibility of the startup, fights somehow till the end, and makes the company survive till the end, and without a guarantee of success or reward in the end. Founder is the person who puts the maximum effort in the development of that company without a guarantee of any reward. He says that as a founder, you will have to embrace the uncertainty. You will have to stop thinking about the reward or about the privileges that the fake founders try to get or the happy founders try to get in the short term. It's not a shortcut, it's a long journey that you will have to take to build something real, raw, and sustainable in the long term. So, number second thing, he talks about the legal structure of the companies. He says that nowadays there's a again a trend where some individuals somehow get a good idea, or they get an idea and they somehow execute it, and they just fast forward the process and do some sales and go directly to the investor, and they ask for the investment. And what's their ask? So simply he said that our ask is for $1 million, for $2 million. So it was a really funny moment in the session, and he told us that these individuals ask for such huge numbers, but there's no legal structure or transparent structure of the company. They are unable to prove the transparency or the even the sales profit or loss of the company, because their company is not legally structured, or they are not a transparent organizations. They have used their personal emails, personal phone numbers, personal accounts. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्टार्टअप बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है काशिफ अली, और मैं उसको इतना पर्सनलाइज कर देता हूँ कि भाई जो स्टार्टअप का अकाउंट है वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट है, काशिफ अली. तो जब मैं इन्वेस्टर के पास जाऊंगा तो उसको मैं क्या अपना पर्सनल अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि भाई ये 50,000 आए, 2 लाख आए या 3 लाख गए, ये सेल्स हुए, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है. नो, दिस इज नॉट ए वे टू प्रूव द ट्रांसपेरेंसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और योर स्टार्टअप. एन इन्वेस्टर विल नॉट ट्रस्ट यू, क्योंकि दिस इज नॉट ए वे इन द बिजनेस कल्चर सिंपली. क्योंकि to gain the investment and to gain the trust from an investor, you will have to make your startup a separate entity, a private limited organization. क्योंकि इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका स्टार्टअप एक सेपरेट एंटिटी हो जाता है, अवे फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ इश्यूज यू कैन से, एंड पर्सनल डिटेल्स सच एज फोन नंबर्स, ईमेल और अकाउंट्स. द मेन थिंग, वो एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है, प्राइवेट एंटिटी बन जाती है आपका स्टार्टअप, जो कि खुद के असेट्स, लाइबिलिटीज़ और फंड्स मैनेज कर सकती है. उसका एक खुद का अकाउंट होता है जो कि सारे अपने कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस को मैनेज करती है सेपरेटली.
एंड इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी एक टीम, इनिशियल टीम 4 बंदों की, और कुछ टाइम के बाद आपका स्टार्टअप चल रहा है लेकिन आपकी आपस में नहीं बन रही और आप ब्रोकअप कर देते हो। तो अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो एक इंटरमिंगल्ड कंपनी है आपस में ही 4 बंदों की, भाई किसी का ईमेल लगा पड़ा है, किसी का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, किसी का जीमेल यूज़ कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं। सो यू अल्टीमेटली आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नेगोशिएशन करना अपने टीममेट्स के साथ, क्योंकि ब्रेकअप कर रहे हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुन रहा होता, किसी की आस क्या होती है, किसी को कौन-सी इक्विटी चाहिए होती है, किसी को क्या वैल्यूएशन चाहिए होती है और कोई देने को तैयार नहीं होता। सो अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सो यू कैन डील विथ दीज इश्यूज विथ ए थर्ड पार्टी और इवन इन द कोर्ट, जहाँ पे आपकी कंपनी की रियल वैल्यूएशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे शेयर्स वगैरह, और इजीली आप वो भी एक मसला हल कर सकते हैं विदाउट डिसरप्टिंग द होल स्टार्टअप और होल कंपनी। So, number third thing he talks about the business impact analysis. He says that nowadays founders think कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई तो इट्स द फ्री मनी, यू कैन एक्सपेरिमेंट एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। बट नो, गजाली ने कहा कि पैसा डालना, इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, लेकिन उसको गेट बैक करना फ्रॉम द कस्टमर, उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल। क्योंकि कंसिडर यू कंसिडर यू हैव ए कार, और अगर अब उस पे अगर आप अपना बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करते हो और उसको सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है या उसको रन करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट कर लें। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा टायर उसमें रख सकते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा टायर हम रख रहे हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज, फॉर द सेफ साइड, कि अगर कहीं पंचर हो जाए लॉन्ग ड्राइव में तो हम ये फिट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा इंजन भी रखूँगा अपने कंपनी में, अपने कार में, क्योंकि मेरी कार जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमारा रिस्क मैनेजमेंट और अच्छा हो जाएगा और फेलियर के चांसेस वो और कम हो जाएंगे, और हमारी कंपनी के जो है और हमारी कार जो है वो चलती रहेगी, चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इफ़ यू थिंक कि स्टार्टअप जब आप ये इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी फूलिश अप्रोच, क्योंकि एक तो आपका इंजन काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसको रिकवर करना, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई है। सो दिस इज़ नॉट ए गुड वे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। सेकेंडली, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है इंजन फेलियर की बहुत कम है, बहुत कम है। टायर पंचर होने के चांसेस के साथ बहुत कम है। सो दिस इज़ नॉट ए वे कि आप उस मिनिमम चांस को टारगेट करके एक कंप्लीटली न्यू इंजन या एक्स्ट्रा इंजन अपने कार में रख लें। So this is a very foolish way to invest the funds of your investor or of your budget also, कि भाई आप इस foolish तरीके से अपने funds को invest करें। So he says that every investment should be done on the business impact analysis, कि भाई जो आप invest कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या है और उसका एंड गोल क्या है, क्या वो लॉजिकल भी है, क्या जो नंबर्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेंस भी बना रहे हैं। So this is the way to do the business impact analysis, in which you have to do extensive research before doing anything new or before even starting anything. So number fourth thing he talks about is the testing, solid planning, and dry runs of your idea before jumping or before developing it. He says that okay, bhai, if you have got an idea, cool, great, get it reviewed from a third party. Is such a third party which is not your best friend, which is not your family members or the siblings, you can say, is such a third party, especially a business person, which will give you brutal reality check, brutal advices related to your plan, that this is your plan, this is not practical, or this is practical, but this is where it sucks. This is where it sucks and how it could be improved. So he says that get your ideas reviewed from a third party and be realistic related to your problem that you are solving related to your startup idea.
Don't expect the overnight success and crores of revenue out of thin air. You will have to put the effort if your problem is valid, and if there is a demand in the market, you will have to put the effort, build a real product, solve the problem, and satisfy the customer to grow your business, startup, and sustain it in the long term. So get it reviewed and accept the criticism, and don't ask your friends related to your ideas, startup ideas. They will appreciate you, but they will not give you the reality checks that you need, or the honest feedbacks that you need related to that idea or that problem that you are going to solve. He says that be real, build real, accept the criticism as a founder, because if you are not going to accept the criticism, you will not improve. So again, what were the four brutal advices of Muhammad Ghazali? Number one, founder is a mindset. It's not a fancy role. Number two, make your startup legally transparent and structure it wisely so that it could be easy for you to raise the investments and gain the trust of the investors. Number three, do the proper business impact analysis on everything that you are going to start and everything that you are going to proceed further in your startup, such as making an investment or buying an extra engine or buying an extra tire. So it would be your choice that how you are going to manage your funds and by doing the proper business impact analysis. Number fourth, last but not the least, that get it get your ideas reviewed from a brutally honest third party that doesn't care about your feelings, about your beliefs, about your problem, your ideas, or your plans. They just give you brutal reality checks and brutal, honest feedbacks related to your plan that, beta, this is where it sucks, and this is where the real problem is, and this is why it doesn't work, and it will not work. So that's all, and thanks for watching.